Thank you. Today, of course, we are making a few announcements, which you may call as the next step in the series of stimulus announcements that we've been making. But before doing that, I wish to give a picture of the economy as it stands now, and also give you a picture of the various progress that we've made in the Atamnirbhar announcements that we've made over the months. So first, the state of the economy, there is definitely a strong recovery scene that is emerging. Active cases of COVID have declined from 10 lakhs to 4.89 lakhs. And the case fatality rate has also come down. It is at 1.47 as it stands now, 1.47%. If I move over to talking about the economy, you're aware in the last 10-15 days, there have been quite a few measures and steps and indicators which have shown that the recovery is happening and distinctly, clearly happening. The Composite Purchase Managers Index has risen to 58.9 in October, and the previous month it was at 54.6, and therefore this is the strongest increase that you've seen in output in close to 9 years. So that itself shows it is just not the pent-up demand, but also a strong pitch for recovery. The next is about the energy consumption growth. That's been at a very high level. If you look at year-on-year comparison, it's at 12%, October to October, 2020, 21. The GST collections, of course, even as it was announced, had touched 1.05 gross, 1.05 lakh crores, and it's a 10% year-on-year comparison. Daily railway freight tonnage also has grown by 20% year-on-year. And if you were to look at the previous week comparison, we are taking it that it is year-on-year 12% was the figure earlier. Bank credit, which most often we have this little worry that credit flow is slowed, but I would like to say here, bank credit year-on-year growth improved by 5.1% as of 23rd October 2020. Of course, markets, you're watching, markets are at record high. Record market capitalization is happening. Net investments, FPIs, is positive. And the reserves like never before of foreign exchange is at $560 billion US. Now, you also know that the RBI has now announced that it will come out with a monthly report of how the economy is moving. And the first of such series of monthly reports, it used to give us reports even earlier, but now looking at the economy, they are giving us this monthly report, which predicts a strong return to proper growth of the Indian economy, to positive growth. And in Q3 itself, there could be a strong growth, which will bring into the positive terrain. And the expectation earlier was that it will be probably in the fourth quarter that we will reach that kind of a number, but RBI predicts probably that will happen even in the Q3. You also seen that several prominent economists have been writing as to what is the nature of this rebound, and it is just not due to pent-up demand. It's a sustainable, strong economic growth which is being read by many economists who have been writing and also noticing that this growth is also getting energized by the unrelenting reform pitch with which a lot of strong steps towards systemic reforms are being taken by the government. So this is the strong recovery picture which I'd like to put before you. And like the earlier announcements, I'll do it in English and Anuragji would do it in Hindi. Before I go in for the Hindi,
it's also important for us, and I'm sure many of you all have noticed, that Moody's today have come out with the numbers for Indian economy, saying that earlier they were talking about 9.6 negative growth for India, which they have now reassessed and said that it won't probably be at 9.6 negative, it might probably just be 8.9 negative. Whereas for 2022, they had come with a very clear indication that India will be growing at 8.1% earlier, but now they've corrected themselves and said probably India will be growing not at 8.1, but at 8.6. So even these kind of assessments which are being made by agencies are indicating that there is a correction which is happening in a positive direction for India. धन्यवाद माननीय वित्त मंत्री जी। नमस्कार। जैसा माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में जो पीछे कुछ कदम उठाए गए उससे मजबूत वापसी भारतीय अर्थव्यवस्था की हुई है और उसके कुछ आंकड़े आप सबके सामने रख रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती थी कोविड-19 महामारी से लड़ने की, और ये भी स्पष्ट दिखता है कि जहां 10 लाख केसेस से कम होकर ये 4,79,000 केसेस रह गए हैं, वहीं पे मृत्यु दर भी देखा जाए तो मात्र 1.47%, यानी कि दुनिया में सबसे कम में से एक है। परचेज मैनेजर्स इंडेक्स की अगर हम बात करें कंपोजिट की, तो वो भी 54.6% पिछले महीने से बढ़कर लगभग 58.9% अक्टूबर में हुई है। ये अपने आप में स्पष्ट दिखाता है कि कितना सुधार हुआ है और पिछले 9 वर्षों में सबसे ज़्यादा है। बिजली की खपत, ये भी एक और आंकड़ा है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि पिछले अक्टूबर माह के मुकाबले 12% इस साल ये बढ़ी है। इसी तरह से जीएसटी कलेक्शन अगर पिछले साल अक्टूबर में 95,000 करोड़ थी, तो इस साल अक्टूबर में 1,05,000 करोड़ हुई है, जो लगभग 10% ज़्यादा है। तो बिजली की खपत भी बढ़ी जो 12% बढ़ी, जीएसटी कलेक्शन बढ़ी जो लगभग 10% ज़्यादा है पिछले साल अक्टूबर से। रेलवे में माल ढुलाई के भी आंकड़े प्रति टन अगर आप देखेंगे तो पिछले साल के मुकाबले लगभग 20% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हैं, जो कि पिछले साल लगभग 12% इसी हफ्ते में अगर आप देखेंगे पिछले हफ्ते थी। बैंक क्रेडिट की अगर मैं बात करूं, जो बैंकों ने पैसा दिया है, कर्ज दिया है, वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे साल भर 10 साल देखेंगे तो उसमें भी 5.1% का ये इम्प्रूवमेंट है, सुधार है, जो 23 अक्टूबर 2020 की फिगर है। मार्केट्स के आंकड़े आपके पास रोज आते हैं जो रिकॉर्ड हाई हैं, उछले स्तर पर हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन ये भी रिकॉर्ड है, और इसमें जो एफपीआई नेट इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें जो पॉजिटिव आया है वो भी आप सबके सामने है। और अगर विदेशी मुद्रा भंडार की मैं बात करूं तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि $560 बिलियन ये भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है। ये अपने आप में एक सुखद खबर है। एफडीआई इनफ्लो, विदेशी पूंजी निवेश, ये अगर आप महामारी के समय भी अप्रैल से लेकर अगस्त महीने तक का देखेंगे तो $35.37 बिलियन हुआ है, जो लगभग पिछले साल से 13% ज़्यादा है। तो ये कुल मिलाकर सारे आंकड़े दिखाते हैं कि किस तरह से भारत में अर्थव्यवस्था में वापसी बड़ी मजबूती के साथ हुई है। ये आंकड़े अपने आप उस दिशा में दिखाते हैं। आरबीआई ने जो प्रेडिक्शंस की थी, जो भविष्यवाणी एक तरह से की, उसमें भी अगर आप देखेंगे कि भारतीय इकॉनमी में जो बदलाव और उसमें वापसी की बात कही है, वो बहुत फ़र्क इस बार देखने को मिलता है। पॉजिटिव ग्रोथ की बात कही उन्होंने क्वार्टर 3 में, यानी कि तीसरी तिमाही में पॉजिटिव ग्रोथ की बात कही है, और वहीं पर जो अगले साल के लिए भी बात कही कि चौथा क्वार्टर जो है उसमें हम लोग बेहतर करेंगे। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जैसा माननीय वित्त मंत्री ने अभी कहा कि मूड देश के अंदर भी ठीक हुआ और मूडीज़ की रेटिंग भी जो है
वो भी भारत के प्रति उसमें सुधार हुआ है। जो -9.6% कही थी उसमें बदलाव करके उन्होंने अब 8.9% कहा है माइनस, और अगले वर्ष के लिए जो उन्होंने 8.1% ग्रोथ पॉजिटिव कही थी उसमें भी 8.6% कहा है। तो अपने आप में दिखाता है कि देश के अंदर तो सुधार अर्थव्यवस्था में हो रहा है, दुनिया भर की नज़रों में भी भारतीय अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी, इस दिशा में आंकड़े सामने आ